हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स की स्टडी करेंगे और PYQ सॉल्व करेंगे, जो IITG मेंस और एडवांस से रिलेटेड रहता है। तो इसमें हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द IITG and engineering entrance examinations, and it may be helpful for other competitive examinations like IIT JAM, NET, JRF, CSIR, and other assistant professorship for the state exams. So आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको जो भी कंसेप्ट फंडामेंटल्स बताए जाएं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग हियर कॉस्मोस। Let's start. Problem that is asked in IITG Mains Examination 2018, and this is very crucial and important question that is going to ask in any coming competitive examination. Like this problem, it is very important. So they may be asked in the IITG Mains by changing the sum terms again, and it can also be asked in the IIT JAM exams, NET JRF, CSIR exams, and PGT exams that is associated with the physics subject. So, whoever is watching this video, please listen carefully and remain throughout whole of the videos, so that you can get all the concepts and fundamentals related to this problem. So here the problem is a given object takes n times more time to slide down a 45-degree rough inclined plane as it takes to slide down a perfectly smooth plane 45-degree incline. The coefficient of kinetic friction between the object and the incline is. So it is asking the coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane, and it is given that the situation. So two situations are given. Let us discuss the situation one by one. First situation is that when the object is sliding down a 45-degree inclined plane, and when it is smooth plane, no friction, right? For that mu is equal to 0. So suppose this object is kept here, and it has mass m, then the downward force is due to its mass and acceleration due to gravity. Therefore it can be resolved into two component, mg cos theta and mg sin theta, because this is 90 minus theta degree and theta is here the 45 degree. So this is theta. So first condition is this: the plane is smooth, right? Second situation is that when plane is inclined at the same 45 degree, but it is rough plane, rough inclined plane. For what? mu आपको निकालना है, ठीक है। kinetic friction, coefficient of kinetic friction आपको फाइंड करना है. So again here the object is kept of same mass 90 minus theta if it is theta. So when you resolve this, it becomes mg cos theta and this becomes mg sin theta.
the normal reaction acting in along this perpendicular to the contact surface. So these are the two diagrams for the problem, and it is given that time taken for the both cases. Suppose for this smooth plane, time taken is t smooth, and for this time taken is t rough. So in this case, in this problem, t rough is equal to n times the t smooth, right? T rough is equal to n times the t smooth. ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, इसका ही इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। एक और बात नोटिस करना है, जब हमारा ये जो बॉडी जो है, जो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, इस पर रखा जा रहा है, क्या स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, तो रफ प्लेन में इस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, दैट इज अपोजिट टू दिस mg sin थीटा। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है रफ प्लेन में, बट स्मूथ प्लेन में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में हम जो है मोशन जो है ऑब्जेक्ट का चेक करेंगे। तो मोशन, इसके लिए मोशन क्या होगा, हमारा जो फोर्स जो लगेगा इसमें ओनली द अलोंग द mg sin थीटा, तो हमारा जो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इन केस ऑफ स्मूथ that is a smooth, as is equal to this mg sin theta, only this upon m, only this mg sin theta is acting, therefore acceleration in for the smooth plane is as g sin theta. But in case of the rough plane, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लग रहा है, हमारा ये स्लाइडिंग डाउन कर रहा है mg sin थीटा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा नेट फोर्स होगा नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f अपॉन m, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा रफ के लिए, रफ सरफेस पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेट फोर्स हमारा mg sin थीटा माइनस एफ होगा डाउनवर्ड अलोंग द रफ प्लेन, डिवाइडेड बाय m विल गिव द रफ ए रफ एक्सेलरेशन रफ फॉर द रफ सरफेस। सो mg sin थीटा and f frictional force, you know frictional force f is equal to mu n and n is equal to mg cos theta and for our case it is same for both the plane 45 degree, so we'll keep that 45 degree later. So mg sin theta minus mu mg cos theta upon m, and this will give g sin theta minus mu g cos theta. आपका ये आ गया, दोनों केस में ए रफ आ गया और ए स्मूथ आ गया। So clue is that it is given that the clue in terms of time, t rough is equal to n times t smooth. So we get the acceleration. Now we consider the equation of motion, s is equal to ut plus half at square, so that we get time and acceleration both in that equation. So let us see, when object is placed over the inclined plane, it starts sliding from u is equal to 0, that is initial velocity इसकी क्या है, 0 है, initial
स्पीड क्या है, 0 है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर we will utilize, and in that case s is equal to half at square because u is equal to 0. Therefore for a smooth surface s smooth is equal to half a smooth t smooth square, and for rough surface distance s rough is equal to half a rough t rough square. So since the plane length is same for both cases, the distance traveled by the object is same, therefore what you will do, distance travel is same for both cases, therefore s rough is equal to s smooth. Then we keep half a rough t rough square is equal to half a smooth t smooth square. This gives a rough t r rough square is equal to a smooth t smooth square. But in our case, time for the rough and time for the smooth is given, that is t rough is equal to t smooth into n times square square. This gives ar ts square n square is equal to as ts square. This gives ts cancel, right? ts cancel. What you get? Relation between a rough n square is equal to as. So you get this relation, and already we have a rough is equal to g sin theta minus mu cos theta, and es is equal to g sin theta. What we have is, let us collect this. We have as is equal to g sin theta, and a rough is equal to g sin theta minus mu g cos theta. यही है ना, g sin थीटा माइनस mu g cos थीटा. ये आपके पास दो सिचुएशन है, ठीक है. सो हम जो है चाहें तो इसके लिए हम वैल्यू रखते हैं. अब हम हमारा इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको यहाँ से as अपॉन ar कितना निकल रहा है? दिस गिव्स as अपॉन ar, मतलब स्मूथ एक्सीलरेशन एंड रफ एक्सीलरेशन में रेशियो क्या, as अपॉन ar n स्क्वायर. ये आपका निकल गया. as अपॉन ar कितना निकल गया? n स्क्वायर निकल गया. नाउ डिवाइडिंग दीज टू क्वेश्चंस, as upon ar, as is equal to g sin theta upon ar is equal to g sin theta minus mu g cos theta, ठीक है. एंड as upon ar हमने निकाला n स्क्वायर. n स्क्वायर is equal to g sin, now we will keep the value for theta, sin 40 upon g sin 40 minus mu g cos 40. g is common out, so g sin 40 1 upon square root 2
and g 1 upon square root 2 minus mu cos 40 1 upon square root 2 cos 45 क्या होगा, सेम ही होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, आपका जो है जी जी कैंसिल, जी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया वी गॉट 1 upon square root 2 upon 1 upon square root 2 1 minus mu, that is we get 1 upon 1 minus mu. So n square is equal to 1 upon 1 minus mu. That means 1 minus mu is equal to 1 upon n square. That means mu is equal to 1 minus 1 upon n square. So this is the value for kinetic friction. Mu is equal to 1 minus 1 upon n square. 1 minus 1 upon n square. So this is the correct option for this problem. So बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, और ऐसे यदि प्रॉब्लम आपको एग्जाम्स में आए तो आप कर लेंगे। हो सकता है 45 डिग्री की जगह पर आपको 60 डिग्री दे दें, 30 डिग्री दे दें, और आपको सेम प्रॉब्लम पूछ दे, उसमें आपकी ये इक्वेशन जो आए हैं हमारे mu की वैल्यू चेंज हो जाएगी। डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन आई थिंक इट इज व्हेन वी आर सॉल्विंग फॉर थीटा, if you are keeping the theta values, so it will change the value for mu, because totally this equation n square depends on the angle theta and mu. So your value, if you don't place this value sin theta theta degree, so what you will get, this is the n square, and you will get the mu, that is kinetic coefficient of kinetic friction in terms of theta only, sin theta and cos theta term, in terms of sin theta and cos theta. That means let us further discuss that n square is equal to sin theta upon sin theta minus mu cos theta, and you want to solve this equation for mu. So what you will do, divide numerator and denominator by cos theta. So what you will get tan theta upon 1 minus tan theta minus mu, that is n square. So you will get n square tan theta minus n square mu is equal to tan theta. That means n square mu is equal to n square tan theta minus tan theta. So mu is equal to tan theta minus 1 upon n square tan theta. So let us revise if any error occur or not. So n square tan theta minus mu. So n square tan theta minus n square mu is equal to tan theta, and therefore n square mu is equal to n square tan theta minus tan theta. Therefore mu is equal to tan theta minus 1 upon n square tan theta. So basically what happened, that this is 1 minus 1 upon n square into tan theta. So mu is the relation. So what we get is a very important and crucial relation for such problem, that if you are given the times related to the smooth plane
rough plane, right? So, and question is asking in terms of the kinetic friction. So remember that this is the times, how much times the it is taken related to the smooth surface when the object is sliding on the rough surface. So that is the n, and theta is the inclination of the plane. So theta for our case it was 45 degree. So tan 45 degree is equal to 1, that is mu is equal to 1 minus 1 upon n square. But if it is not given 45 degree and you are again asked the find the coefficient of kinetic friction, this will be the relation. It might be asked in the coming examination that you are being asked that what is the value for mu, and it will be in terms of tan theta and n square, right? There is a possibility. So you know the how you get this relation. This is very important thing, and you must remember this, that kinetic friction will be given by mu is equal to 1 minus 1 upon n square tan theta, and directly find the relation, find the answer. So बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, फंडामेंटल क्लियर हुए हों, कुछ आपने सीखा होगा। और ये रिलेशन भी हमने फाइंड किया, दैट इज थोड़ा अलग है, हटके है, मगर ये फंडामेंटल कंसेप्ट जो है आपको कमिंग एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है, मुझे जैसा उम्मीद है। तो इसलिए इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, इसको आप समझ लीजिए। और आपको ये जो है सॉल्यूशन का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हीरा कॉस्मोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज हीरा कॉस्मोस को लाइक करके फॉलो कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।